guys, welcome back to my channel Heaven's Tutorial. So today we'll study the second exercise of the third chapter, that was the laws of motion. If you have seen the previous video of physics, the laws of motion, then I have told in that video that this chapter is very important, and let me show you why. So this is a question paper, the annual question paper of physics. So we are going to calculate the total marks. So here the question 2, except this D part, the three parts, they are from the laws of motion. So 2, 6, and this B part 6 and 2, 8, 8 and 3, 11, 11 and 4, 16, 16 and 3, 19. So 19 marks के questions आए थे from this chapter. So that's why this chapter is very important. And see here, this is a question related to the thing that I've told you in the previous chapter. And if you have not seen the previous chapter, do give it a view. So your first example is, when a train suddenly starts moving forward, the passenger standing in the compartment tends to fall backwards. The reason is that कि जो lower part होता है passengers body का, that is in close contact with the train. और जैसे train this starts moving, उसका lower part that shares a motion में आ जाता है उसका lower part. लेकिन जो upper part रहता है, that inertia of rest की वजह से that can't share the motion simultaneously. मतलब वो भी motion में आ नहीं सकता upper part. So it tends to remain at the same place. तो जो हम लोग की अपर बॉडी होती है वो अपनी प्लेस पे रहती है. एंड फिर क्या होता है, लोअर पार्ट जो होती है बॉडी का, दैट मूव्स अहेड क्योंकि वो मोशन में है विद द ट्रेन, और जो अपर पार्ट है दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. सो द पैसेंजर दे टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स. तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल. Next example is, when a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles starts falling out of it. Reason इसलिए होता है, जब हम लोग carpet को बीट कर रहे होते हैं तो that comes in motion, और जो dust particles हैं उसमें they remain in the position because of inertia of rest. इसलिए the part of the carpet that moves ahead with the stick, that is in motion, और जो dust है that is in the state of rest, they fall down due to the earth's pull. Third example is, on shaking the branches of a tree, the fruits fall down. The reason is, जब stem या branch tree का that they are shaken, they come in motion, और जो fruits हैं which are in the state of rest, they remain in the state of rest. और जो massive और weakly attached fruits है वो detach हो जाते हैं branches से, and they fall down. Why? Because of the pull of gravity. On striking the coin at the bottom of a pile of carom coins with a striker, lowest key only moves away, while the rest of the pile remains intact. So इसके लिए reason is that जब striker that hits the lowest coin, it moves, means it changes its state of rest, motion में आ जाता है. और जो remaining pile of है coins का, inertia of rest की वजह से they remain where they are, and then they ultimately takes the place of the original pile due to the force of gravity. तो यहाँ पे motion में lowest coin आ जाता है, और बाकी जो pile of coins हैं they remain in the state of rest. Now inertia of motion मैं बता चुकी हूँ क्या है. Now we will read the examples. So first is, a cycle riding along a level road does not come to rest immediately after he stops pedaling. अब reason क्या है? The bicycle that continues to move because of inertia of motion, even the cyclist stops applying the force on the pedal. But bicycle, so that is in state of motion. So bicycle that comes to rest after some time because of retarding force of friction. Retardation मैंने पढ़ाया था in the second chapter, the motion in one dimension, कि retardation क्या होता है. Acceleration में जब acceleration का उल्टा होता है retardation.
Okay, force of friction between the tires of bicycle and the road. Retardation की वजह से थोड़ी देर बाद bicycle that comes to rest. Next is when a passenger jumps out of a moving train, he falls down. ये इसलिए होता है क्योंकि inside the train, the whole body of the passenger that is in the state of motion with the train. But when the passenger he jumps out of the moving train, जब उसका feet that touch the ground, when his feet touch the ground, तो जो lower body है that comes to rest और जो upper body है that is in the state of motion. अब इस वजह से he falls in the direction of the motion of the train to get hurt. तो ये avoid करने के लिए the passenger feet touch the ground and he should start running on the ground ताकि धीरे धीरे like retardation ना आए. सो ये क्यों है, मूविंग ट्रेन है तो उसकी पूरी बॉडी मोशन में है, तो जब वो अपना फीट ग्राउंड को टच करता है तो उसका जो अपर बॉडी होता है दैट इज इन मोशन और जो लोअर बॉडी वो का रेस्ट पे आ जाता है, इसलिए ही फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन एंड गेट्स हर्ट. Third is when a running car stops suddenly, the passenger tends to lean forward. रीज़न ये है कि रनिंग कार में जो होल बॉडी होती है दैट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, और जब कार रुकती है तो सडनली जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है विच इज इन द कॉन्टैक्ट विद द कार दैट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो तो मोशन में रहता है, इसलिए इनर्शिया की वजह से हिज बॉडी लीन्स फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप. Reason is this कि running he brings his entire body in the state of motion. तो जब वो body motion में रहती है तो it becomes easier to take a long jump. So this was your exercise B, Newton's first law of motion and inertia. I hope you have understood it clearly. और मैंने बता चुकी हूँ क्या चीज़ आ सकती है. Also if you have any doubt, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे. और अगर किसी भी सब्जेक्ट की या चैप्टर की पिक्स चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ. यू जस्ट हैव टू कांटेक्ट मी ऑन दैट लिंक. सो इफ यू लाइक द वीडियो, गिव द वीडियो अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and comment the questions that I've told you in the comment section. Thank you so much.